Hello friends, good morning. I am Bhavesh back to my channel with this exciting video today. आज की खास बात है कि I have got my courier, my package which I was waiting eagerly for और इसमें है surprise for my bike. So let's quickly open up and see what is there inside. पैकिंग बहुत ही अच्छी की गई है एंड डिलीवरी वाज द फास्टेस्ट। मैं आपको सब बताऊंगा कि ये बॉक्स ये मैंने कहाँ से कुरियर किया मंगवाया है। इट इज़ वन डे डिलीवरी बेसिकली दैट आई हैव रिसीव्ड एंड बिकॉज माय लोकेशन इज नियरेस्ट टू दैट सिटी। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने हिमालयन में एसेसरीज डलवाई थी सूरत जाके। तो ये नेक्स्ट स्टेप है एसेसरीज में। एनी गेसेस कि क्या हो सकता है? वेल, हियर इज द सरप्राइज। ये आप देख सकते हैं, ये है हार्नेस। दिस इज बेसिकली अ प्लग एंड प्ले हार्नेस। दो टाइप के हार्नेस आते हैं, एक स्टैंडर्ड हार्नेस जो कि आप एक बार लगा के रख सकते हो, and this is the plug and play harness which basically helps you to remove the auxiliary whenever you are required। अगर आप सिटी में हो, नहीं आपको यूज़ है तो आप लाइट निकाल सकते हो। और ये इजीली नाम ही रखा गया है प्लग एंड प्ले करके। दूसरा ये है आपके क्लैम्प्स जो कि मिलते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो आप समझ सकते हो क्या होता है। So this is the clamp that we have received। And then we have the lights over here, set of one each। This is basically the extra thing। यहाँ पे भी clamps दिए गए हैं एक्स्ट्रा। ये है स्विच जो मैंने मंगवाई थी, अगेन प्लग एंड प्ले स्विच है। और ये है हमारी लाइट्स। जैसे कि आप देख सकते हो, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। और इसमें मिलता है हमें येलो कलर का कवर। एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइज। अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे फॉगी एरिया है या फिर कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे येलो लाइट हेल्प्स अ लॉट कंपेयर टू दी वाइट लाइट्स। तो इसको हमेशा अपने साथ रखें। बाकी बिल्ड क्वालिटीज बहुत अच्छी है एंड दिस इज अ 4 LED 60 वॉट क्रेड की लाइट है। मैं आपको स्पेसिफिकेशन इसका दिखाता हूँ जो भी है। सो गाइज, हियर इज द स्पेसिफिकेशन। ये आप देख सकते हो, ये है 60,000 लुमिनस की लाइट, 60 वॉट एंड इज अ क्रेड LED 40।
Okay friends, so this is the before and after of the auxiliary light that I have put on my Himalaya. Just to showcase again, this is the light that you can see that I have installed, and now we will check the focus and the beam of the light. So as you can see, the light is very sharp. It's quite helpful during the night time, and it has too much of power also. There are multiple modes in the lights, you can see. If we switch on and switch off, we can see multiple blinking things, and then we have another mode. So there are basically three modes in this switch. One is a straight focus, then we have alternate blinking, and then we have again both blinking at the same time. So hope you enjoy this video. This light is extremely good during the night time on the highways for the long ride. The width and breadth of the light is quite powerful. Thank you, and hope you all enjoy this video.